side. I am an international makeup artist and a skin cosmetologist, and here to solve all your problems जो bridal related है. We must have faced this a lot, जहाँ पे generally जो brides के questions होते हैं that are so tricky sometimes कि उन्हें जो answer करना है वो बहुत difficult हो जाता है. And also from मेकअप आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव, अगर हम ब्राइड के पर्सपेक्टिव से मेकअप आर्टिस्ट को देखें तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो मोस्ट ऑफ दिस questions are many a times unsolved, and these are the questions that I always get from my brides as well. So these are some answers to it and how you can tackle. Also, if you are a bride, you will understand the basics of why we answer in a particular way. So I'll be not wasting much time, and let's start as soon as possible. I will be answering today top 25 questions जो generally Indian brides पूछती है about skin care, makeup, pre-bridal services, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, and also some of my tips that I generally suggest to my brides. So let's start. So mostly the very first and common question is, how many months before my wedding should I start my skincare routine? Now, this is a very basic question. Of course, you are going to be a bride. You would want to look the best possible that day, right? So, if I generally suggest this, if you already have a skincare routine that you are already following, you can keep continuing that, because any immediate changes is not right. अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आपको पता है बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज ब्राइडल वेडिंग टाइम है इसलिए उन्हें आप दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, मे बी दैट इज नॉट सूटिंग हर फेस. सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए अगर उनके पास स्किन केयर रूटीन है, अगर वो डर्मैट के पास विजिट करते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं, देन लेट देम बी डूइंग द सेम थिंग दैट दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग. इफ यू फील दैट उनका कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है एंड दे वांट टू स्टार्ट, देन डोंट गो विथ हाई एंड प्रोडक्ट्स जो वो लोग मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे. Because if I am a beginner to skincare world, I would not follow 4 to 5 skincare routines, right? So it's very important to understand that how much to give and where to stop. And being a makeup artist now, I also am a cosmetologist by profession, so sometimes it's easy for us to suggest good products. But when we talk about a makeup artist, they are not skin specialists, right? I'm sure you would agree that sometimes even makeup artist finds difficulty in finding the right skin type of their brides as well. So here what important is not to overload products and go for some options like vitamin C, antioxidant effect, ceramide based moisturizers, which is okay for all skin types. Next question is, what pre-bridal treatment are actually worth it? Facial, chemical peels, hydra facials, Korean facials. These days, everything is hyped in skincare, and therefore this question, pre-bridal skin treatments में generally हम जो अगर हम एक पहले का जमाना देखे तो ब्राइडल्स के पहले वो लोग सैलून में जाते थे, सैलून में एक प्री ब्राइडल पैकेज मिलता था, उसे सिलेक्ट करते थे एंड उसे सिलेक्ट करके परफॉर्म करके घर आ जाते थे, हो गया मेरा स्किन केयर रूटीन. नाउअडेज इट्स नॉट लिमिटेड टू इट. आप सैलून में जाके वैक्सिंग करा सकते हो, फेशियल्स करा सकते हो डेली बेसिस पे, आपको चाहिए तो आप बाकी सारी ट्रीटमेंट्स करा सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, हाइड्रा पीलिंग, केमिकल पीलिंग्स एंड ऑल. Now, these are chemical and medical treatments which should be performed under professionals. So, this question coming to a makeup artist, somewhere I feel is not worth enough, because they may not understand this well and may create a misunderstanding or misleading. सो जनरली फेशियल्स वाला चीज जो है ना, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बट हाइड्रा फेशियल्स, कोरियन फेशियल्स, दीज आर सम ट्रीटमेंट्स जिसमें मशीन इन्वॉल्व होती है. एंड व्हेन देयर आर मशीन इन्वॉल्व, इट शुड बी एनालाइज्ड if that particular machine is needed for your skin. If it is not needed for your skin, why will you
do that treatment. If your face hydration is better, why will you go for hydra facial? You may think of going for something else. If you have dark circles, you may go for under eye peelings instead of hydra facial, right? So this is a treatment where you need skin analysis, and every skin treatment has different skin type decided. So according to that we have to alter. So there's nothing like हाइड्रा फेशियल से अच्छा ग्लो आएगा तो वो करवाते हैं, केमिकल पील से अच्छा ग्लो आएगा तो वो कराते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप बेसिकली. So and of course, if you are going for these kind of treatments, if you are looking for these kind of treatments, of course salons and अच्छे salons में अगर आप जाते हो, आपको recommend mostly किया जा सकता है. But it's always better if you are trying for the first time these advanced treatments to be tried 3 to 4 months पहले एक बार, and then try anything 1 month or 1 week pehle before your wedding, because you know that this treatment which is going to happen is also going to suit you. So that is very, very important. Third question: my skin is breaking out 2 weeks before my wedding, what should I do? Well, again, we women go through a lot of hormonal stress, and there are number of things related to your skin. It's not just about skincare, but if you are stressed a lot, pimple popping out, and especially on these occasions, is very normal. So if you get that, बी काम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेकआउट कर लो, दैट इज देयर एनीथिंग स्ट्रेस जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है. या फिर यू कैन स्टार्ट विथ योर, देर आर सम पिंपल पैचेस जो अवेलेबल होते हैं. अगर कोई एक हाथ पिंपल आता है, यू कैन यूज दैट. देर आर नीडल पिंपल पैचेस इज वेल जो अवेलेबल है विद सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूजन एंड मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स, नियासिनामाइड इन्फ्यूजन, जो आपके पिंपल पे जाकर बैठ जाता है, एंड बिकॉज उसमें पंच नीडल्स होते हैं, वो पिंपल को अच्छे से क्योर कर पाता है. एंड आफ्टर सम टाइम वो पिंपल्स के जो नीडल्स है, जो पैच है, वो डिजोल्व हो जाता है ओवरनाइट. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो नीडल रह जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है. दैट इज केमिकली मेड, इट्स नॉट रियल नीडल. So that would help you a lot. If you feel कि अगर कोई एक हाथ acne breakout हो रहा है, you can keep that pimple patches handy for you. Then let's move on to other questions. Is it safe to try new skincare products close to my wedding date? As answered, new skincare products to perform is not right. When you are close to wedding day, for example, if you are 2-3 weeks, you are just 2-3 weeks away from your wedding day, it's better not to do any kind of experiments on your face. As I said, even if you're going for facials like chemical peels, hydra facials, Korean facials, and many other advanced treatments, it's important you to try even for 3-4 months pehle, so that you are clear with if there is any problems, if that facial is suiting you or not, if there is any breakouts or anything, you are still okay and you can treat that, right? So anything on that days. And anyways, any product, it's not just about experimenting, it's also about, even if that product is good for your skin and will cause no harm, any product will take at least 3 months to show their effect. So trying anything on that day is of no use, or within 1 or 2 weeks में कुछ extra experiments करोगे, वो कुछ भी results नहीं देने वाला है. Anything should be at least followed for 3 months to give slight differences. Should I get a facial 1 week before or 1 month before my wedding day? I think this is answered now. It's better to get 3-4 months pehle one time. If you are new to it, if you can do every month, it's completely fine. But if you are new to it and you don't want to experiment and get it so expensive कि मतलब every time मैं करवाऊँ, तो at least एक बार तो आप mock टेस्ट की तरह कर लो, एंड सेकेंड टाइम आप अच्छे से एप्लीकेशन कर पाओगे, सो दैट यू नो द फेशियल टाइप दैट यू आर डूइंग ऑन दैट डे इज गोइंग टू हेल्प यू वेल. So yes, and next facial,
सजेस्टेड जब आप वेडिंग के टाइम पे फेशियल कराओगे या कोई भी ट्रीटमेंट कराओगे, सजेस्टेड एटलीस्ट 1 वीक पहले. इफ यू गोइंग फॉर केमिकल पील्स, नो 1 वीक पहले, इट शुड बी एटलीस्ट 2 or 3 weeks पहले. Okay. How do I get that bridal glow naturally without expensive treatments? Now here is a tricky part because brides generally सारे shoppings and बहुत सारे experiments इसी time पे जाती है, and उसी के वजह से skin में stress and बहुत सारी चीजों के changes हो जाता है. जो फेस उनका नहीं दिख रहा है, उनका फेस अगर अगर नॉर्मल है तो शायद ऐसे हो सकता है इन दीज वेडिंग डेज उनका फेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डार्क सर्कल्स एंड ऑल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to suggest a proper diet. I suggest my clients a proper diet and skincare consultation. It is a proper consultation that we take. So it's important for brides to take care of that. Now, again, as I said, being a cosmetologist, I'm able to provide all these things. But if you are getting a makeup done from only a makeup artist and she is a professional doing that, try considering a dietitian or considering a physical health fitness, any person who is well known in understanding the diets, the at least healthy eatings, so that you can get good knowledge and what to eat. I would personally avoid packaged foods, bakery foods, and complete cut down of sugar. If you can do that, will be a great choice. And mostly अगर आप सिर्फ पैकेज फूड्स, शुगर एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, ये ही अगर 3 चीजें छोड़ते हो completely, then also you'll feel you'll get really a good results throughout. So of course you can try that. Let's come on to next section of questions, which is makeup artist के जो selections and concerns होते हैं. How do I find a makeup artist who won't make me look like a different person? Yes. Now, when we talk about you won't make me look like a different person, it's very easy, right? Generally, जो हम pictures देखते हैं, pictures में से जो selections करते हैं, and उसमें से हम decide करते हैं कि वो makeup artist अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी. Now, here there is one point to mention. When being a makeup artist, I'm saying this, when I share pictures to my bride showing that ये सारे मेरे performances है, ऐसे हमने look किए हुए हैं, still the requirement what my bride is saying can be different to what I have performed till now, till date, right? Because there is every day, every time, every year, there is a new trend and there is a new update which is coming in. So once if I'm performing today, something which is trending for today's generation, maybe it's not trending for the next generation and they want something more trending. Now, it's every time difficult to give them results to the face that they are looking for. It's better to go for trials. What suits you best will understand there. Now, there when we perform trials, specifically when I perform on my brides, I'm very clear that आपका जो फेस आज है उस दिन पे वैसा नहीं रहेगा. स्किन कलर भी मे बी चेंज हो सकता है. And also the appearance, you are there in your home clothes because we provide home trials. Sometimes people come to our place where we provide the trials, so you are on your comfortable clothes, right? You're not wearing lehengas, you're not having any traditional jewelries on. So just to get a transformation or just to get a proper bridal look on the basis of makeup that we have done, where there's no attire included, you will of course not feel like a bride. That day, it's important to you to understand that how much it is matching to your skin, or if you want a heavy makeup, or if you want a lightweight makeup, a natural finish makeup, it's important to take a trial so that you are clear with this doubt. Otherwise, there'll always be a benefit of doubt, of understanding or not understanding whether that bride is going to do well or not. Because pictures तो कोई भी कुछ भी भेज सकता है, एंड उस बेसिस पे सिलेक्ट करने से बेटर आप ये सारे फैक्टर्स को सेकेंडरी रखो एंड आपके स्किन पे ब्राइड क्या परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो.
So that I feel is a better and safer option that you can go for. Next question is the eighth question. Why do all Indian makeup artists makes bride look so fair? Generally, this is a very common thing I get. I don't do this, and most of good makeup artists would agree that that is the reason we talk about choosing how important it is to choose a professional over just a makeup artist who is performed, or a fresher, or maybe charging less but may not give you good results. So here it's all about the makeup artist or a professional who you are choosing and who can you can trust. They know the techniques well, they know the face structure well, they can analyze your face even in front of you. It's not just कि गूगल से सारी चीजें दे दी, आपने आपके सामने अगर हमें पूछा है कि हमारा फेस स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, कैसा मेकअप सूट होगा, कैसा नहीं होगा, what are the eye makeups that I should go, should I really go for a complete smoky eyes, would it suit me or not, that makeup professional should be eligible to give answers on your face so that you understand things well. And you will of course understand the logic and knowledge that makeup artists have, and that makeup artist would maybe not do this. I generally don't try to cover up any skin color or change any skin color. Especially, we try to make sure that we are keeping as natural to the skin color, or as camouflaged skin color. So इसमें हम generally ऐसे provide नहीं करते हैं. Most of makeup artists these days are doing good in this. So yeah. Okay, next question. How much should I actually pay for bride, as these Instagram makeup artists are overcharging? Now, yeah, I can understand they are overcharging. There are people who can give you makeup in very under budget. If your budget is 10,000, they can provide you in 2K as well. And if your budget is 10,000 and if you're looking for a good makeup artist, they can charge you 1 lakh as well. So it's a skill based service, right? Second thing is there are number of product variations that we go through. It's not just about makeup artist is charging that much, but also the product cost in that. If you want a good affordable makeup artist but you don't want to compromise on brands, it's very difficult for a makeup artist to provide that products for you, right? So for example, now people just know brands like Mac and Huda Beauty. If I'm talking to a random person, they only know Mac and Huda Beauty is good brands. But otherwise, there are even more better brands like Chanel, YSL, Bobbi Brown. Now, these brands, makeup brands, have a certain price. Just for 5 mls, maybe it is costing us 3,000 bucks. So this price to also make sure that the product price is taken and the cost, we are not in loss. It's important. When we come to you, the vanity is maybe for the vanity that we are carrying is somewhere around lakhs amount. So we have to also make sure that the price is according to the products that we are using, the quality that we are providing, and not just only products, but also the techniques and so many years of experience that we are providing to you. With all the hospitality, if a person is providing, or if you are going with a brand, so all that things matters. So this is something which is very much personal. Of course, I understand there are people who overly charge just for royalty basis, that I am touching you is the reason I am charging you. If you are going to get a makeup done from my assistant who will give you the same products and the same result, their charges will be different. I don't generally like that concept much. I'm not in the favor of that, because you are a makeup artist, you are not a celebrity. I understand celebrity makeup artist and all sari cheeze. Even I have done number of celebrity makeup artists, but that doesn't mean I can charge you on the basis of क्योंकि मैंने किसी और celebrity को touch किया है. So that biasness and ये जो चीजें हैं, ये even I am not in favor. So I can relate this question well, and I am with you all. So yes.
should I book a famous Instagram makeup artist or go to a local salon? Now, see, it's again based on the skills. It's not on आप 10K के नीचे के फॉलोअर्स को चांस ही कभी नहीं दोगे, उसका कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आजकल जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है, जिस तरीके से ग्रोथ होती है, इफ यू सी देर आर नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो सारे खरीदे हुए हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एंड डूइंग दैट आपको कभी भी राइट पर्सन मिलेगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स। आपको दिख रहा है कि वो फेमस है, आपको दिख रहा है वो फेमस है बिकॉज उन्होंने उनका पेज उस तरीके से क्रिएट किया है, मेड अप किया है आपके सामने, आपको नहीं पता कि वो फेमस है कि नहीं है। सो गेटिंग डन फ्रॉम अ फेमस मेकअप आर्टिस्ट बिकॉज उनके प्रोफाइल में सेलिब्रिटीज के पिक्चर्स है, that doesn't make sense. You have to judge on the basis of if that makeup artist is right for you, if that makeup artist is understanding your needs, what you require, if that makeup artist is also providing some extra services जो आपके skin, आपके pre-bridal services में शायद help कर सकता है, if that makeup artist is helpful throughout your wedding journey, it's not like कि उसी दिन पे आपको आकर मिल रहा है। सो अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आपके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रख रहा है, जहाँ पे everything is decided with makeup artist, maybe that is a good makeup artist for you. And of course, as I said, followers and pictures जो आप शेयर करते, मेकअप आर्टिस्ट शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्ट, वो that should be secondary. If you're getting a trial done, you understand the skin well, and if you are understanding the skin well, if you're liking this makeup on your face, why you want to check for number of followers, इतना famous होना जरूरी है, उतना famous होना जरूरी है, where most of the pages are made up. So I feel even if you're going to a local salon, it's not a problem. Just that you have to figure out the things that I said. Is that provided or not? And is the makeup looking good? It should be judged on the skills, not on the famous things. तो फिर आपको रॉयल्टी चार्जेस भी मिल सकती है उसमें, which as I said, even I am not in the favor of. So yeah, of course, जो famous makeup artist है वो अच्छी चार्जेस के साथ अच्छा सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग फेमस है तो उन्होंने सारे मेडअप ही किए हैं। दैट शुड बी अगेन विथ ऑल्सो योर बजट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। वुड यू वांट टू गो देयर जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट एक रूम में रहेगा, वो आपका मेकअप करके चला जाएगा। सो वो चीज फ्लॉन्ट करने वाली नहीं है कि आपने कहाँ से मेकअप करवाया। आप उस दिन फ्लॉन्ट होने वाले हो, आप उस दिन बेस्ट दिखने वाले हो। तो आपका लुक कौन बेस्ट क्रिएट कर सकता है विथ ऑल द असिस्टेंस थ्रू आउट योर सक्सेसफुल इवेंट डे, वो ज्यादा मैटर करना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what question should I ask my makeup artist during the trial? This great, amazing. Instead of giving them advice on I want my makeup in this way, it's better first you to learn things from her if you have a chance on your trial day. For example, what is your skin type? Second question can be, should I go for 2-3 shade fairer tone? Third question, should I go for heavy makeup or natural base? What kind of eye makeup suits me well? These are the questions where first of all you will understand their knowledge. If the answers are आपके हिसाब से मैम आपको जैसा चाहिए हम करके दे देंगे, अच्छा आपको चाहिए हैवी आई मेकअप, ठीक है हो जाएगा, आपको चाहिए हैवी बेस हो जाएगा, आपको चाहिए नेचुरल बेस हो जाएगा। अगर ऐसे आंसर्स आते हैं तो शी इज जस्ट अ मेकअप एप्लीकेटर, not a professional. I generally feel this because she is not educated with what your skin and your skin type, your skin structure needs. If you can see my face, if I feel my jawline is bit normal but I have a big forehead, I'll make sure I'm only contouring my forehead and not contouring my jawline. So it should be balanced. It should not be like कि सब जगह पे contouring घुमा दिया, सब जगह पे highlighting घुमा दिया.
अब न आई हैव अ गुड स्पेस इन माई आईज, बट अगर उसी की जगह पे मेरी आईज बहुत ज्यादा अंदर होती, लाइक दैट मीन्स समटाइम्स पता है एक हॉलोनेस होता है आईज के अराउंड, देयर इज अ काइंड ऑफ हॉलोनेस एंड कभी कभी शेडोज आती है. सो इफ माई आई टाइप्स इज इन दैट वे, आई मे नॉट सजेस्ट माई ब्राइड टू गो फॉर द a smoky eyes look, right? Because उससे मेरा जो eye है वो और darker and अंदर दिख सकता है. And if my bride is demanding that, of course I'll make sure that I'm also showing her because she has demanded that, but also making sure that I'm explaining before showing that smoky eyes अगर आप करवाते हो तो आपका face कैसे illusion create करेगा और क्या दिखाएगा आपको सामने. पिक्चर्स लेके, लाइटिंग्स डाल के, सब जगह से आप उनको एक्सप्लेन और दिखा सकते हो. बिकॉज उनको जो पसंद आ रहा है वो वो इंस्टाग्राम से या फिर मे बी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूज करके देख रहे हैं. सो यू डोंट नो दैट द थिंग्स दैट द सोर्सेज दैट दे आर एक्चुअली गेटिंग पिक्चर्स स्मोकी आईज ही करवाना है वो कहाँ से है, राइट? सो दैट शुड बी अगेन एज आई सेड कस्टमाइज्ड. So these are the questions I think is very much important for a makeup artist to answer. How do I tell my makeup artist I want natural makeup without them thinking I'm being cheap? No, not at all. You are not cheap. Your preference is natural makeup. And of course, you should not feel that, because even natural makeup and makeup artists can relate this well. Because when a makeup artist is performing makeup for them, giving a natural finish and a heavy finish, it's on the same palette. It's just like आपने आज जो कपड़ा पहना है, लेयर और उसका क्लोथिंग, उसका स्टाइलिंग सब सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है. एक है जो नेचुरल दिखेगा, एक है जो आज जैसे मैंने रेड पहना है वैसा दिखेगा. बट उसमें आपके कपड़े का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, आपके कपड़े का यूज या कपड़ा शॉर्ट है ऐसा नहीं है, आपका क्वालिटी रिड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट द कलर चॉइसिंग्स दैट यू आर चूजिंग. लिपस्टिक हम लगाएंगे, ऑफ कोर्स नेचुरल मेकअप में ऐसा नहीं करेंगे ना कि लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं. ओनली थिंग इज दैट डार्क शेड की जगह पे न्यूड शेड जाएगा. इफ यू आर गोइंग फॉर आई शेडोज, ब्लैक कलर्स, रेड कलर्स, ग्रीन कलर्स, पर्पल कलर्स, डार्कर कलर्स से ज्यादा आपके न्यूड शेड्स जाएंगे, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल बी द सेम. काजल, ब्लैक काजल की जगह पे न्यूड काजल जाएगा. सो इट इज the appearance of the makeup looks subtle, doesn't means कि उसका जो वर्क हमने उसके ऊपर किया है वो subtle है. It is taking the same amount of time and requirements उतनी ही है जितना हम heavy makeup के लिए करेंगे. Heavy makeup के लिए भी हम heavy blush देंगे and इसमें blush का color, blush उतना ही रहेगा, उसका intensity and quantity different रहेगा according to the product that we are using. So blush में भी light fitting blush रहेगा जो दिखने के लिए appearance में कम दिख रहा है, but of course we want long lasting, तो we'll make sure कि हम अच्छा layer लगा रहे हैं. So it will create an illusion कि लगाया कम है and बहुत minimal है, but that doesn't mean we are actually applying very very minimal products. So yeah, so you can of course say it's your thing. And ये क्वेश्चन में ना आई कैन ऑल्सो गेस वन थिंग मोर, सेइंग दैट आई वांट अ नेचुरल मेकअप विदाउट बीइंग चीप. सो समटाइम्स ये क्लाइंट के या कस्टमर्स के दिमाग में होता है कि नेचुरल मेकअप करेंगे दैट मीन्स हमें ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, या नेचुरल मेकअप के लिए क्या पे है. सो एज आई एक्सप्लेन्ड, अगर हम ब्लैक काजल लगा रहे हैं उसके जगह पे न्यूड काजल या ब्राउन काजल थोड़ा सा डेप्थ दे रहे हैं, अगर हम डार्कर शेडोज नहीं लगा रहे हैं तो उसकी जगह पे हम लाइटर शेडोज लगा रहे हैं, अगर हम लिपस्टिक डार्क नहीं लगा रहे तो उसके जगह पे हम न्यूड लिपस्टिक लगा रहे हैं. तो जो कलर प्रेफरेंस है कपड़े की तरह बदलता है, बट कपड़े का जैसे शेप स्ट्रक्चर नहीं बदलता, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, उसका थिकनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वैसे ही हमारा न्यूड नेचुरल मेकअप भी रहता है. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, the question is, okay, I'll take 2-3 questions more. HD makeup versus airbrush makeup, which is better for Indian weddings? Again, this is according to the skin type.
when we as a professional discuss with our brides what they are looking for, what their demand is, right? Now most of times people want seamless dewy effect these days. This is going in trend a lot. Airbrush is a good fit because airbrush of course will give you a dewy effect and is very lightweight with the same thing, and also with good coverage. It's not like we are compromising in coverage. As I said, natural looking base doesn't mean कि coverage में थोड़ा सा compromise करे, इतना सा हल्का सा थोड़ा इधर उधर product लगाया, दिख नहीं रहा है मतलब product ज्यादा नहीं है, ऐसे नहीं होता है. So of course airbrush makeup I would suggest more. But again, if your skin is very oily, if your skin already has that natural shine on your face and you know after 2 hours that shine is going to come on your face, then dewy makeup is not your preference. Then you may go for matte finish look. So that depends. HD makeup से भी आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है. एयर ब्रश मेकअप थोड़ा ज्यादा लाइट वेट दिखता है एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट नोटिसेबल रहता है, बट एचडी मेकअप भी उतना ही अच्छा कवरेज एंड बहुत अच्छा लुक सस्टेन कर पाता है. मैट बेस के लिए भी एचडी मेकअप बहुत ज्यादा सुटेबल है. सो if you really want to check on कि क्या हेवी लग सकता है क्या नहीं लग सकता है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको थोड़ा सा लाइट वेट मेकअप चाहिए तो आप एयर ब्रश के लिए जा सकते हो. अगर आपको चाहिए इट्स ओके कि थोड़ा सा हेवी लगे बट फुल कवरेज चाहिए तो आप एचडी में जा सकते हो. एंड मोस्टली दीज डेज जो हमारे मेकअप प्रोफेशनल्स है, दे नो वेल वेयर टू स्टॉप देयर हैंड्स बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स. सो मोस्ट ऑफ एयर ब्रश मेकअप्स एंड एचडी मेकअप्स अच्छे से कर पाते हैं. अगर इफ योर चॉइस इज एयर ब्रश मेकअप, वील मेक श्योर कि एयर ब्रश आपको अच्छे से दिखे. एचडी कर रहे हो तो एचडी भी आपको अच्छे से ही दिखेगा, बट यस एयर ब्रश इज थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग देन एयर ब्रश एचडी मेकअप. नेक्स्ट इज, कैन आई आस्क फॉर पार्टी मेकअप इंस्टेड ऑफ ब्राइडल मेकअप टू अवॉइड द हेवी लुक? वेल, एज आई सेड, now जब as a professional when we perform, I understand from where these questions are coming. All these questions are coming since अगर हम देखते हैं कि अगर हम सैलून्स या फिर ऐसे कोई जगह से करा रहे हैं जो फ्रेशर्स है या मे बी इतने वेल स्किल्ड नहीं है, दे categorize these makeups differently, where saying that HD makeup पार्टी मेकअप में हमें थोड़ा सा नेचुरल लुक रख सकते हैं, ब्राइडल में तो ज्यादा करवाना जरूरी है. बहुत सारे मेरे मेकअप के क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैंने वहाँ पे उनके पास ट्रायल करवाया था और उन्होंने उस ट्रायल में बताया कि नहीं मैम थोड़ा तो हैवी चाहिए ही है, तो हम आपको डार्क ही लगाते हैं. सो दिस इज द रीजन वेयर क्लाइंट्स आर सेइंग कि बाबा उससे बेटर एक काम करो, मुझे पार्टी मेकअप चाहिए, ब्राइडल मेकअप नहीं चाहिए, बिकॉज ब्राइडल मेकअप के नाम पे आप तो हैवी मेकअप बोलोगे, राइट? सो ऐसे नहीं होता है. जनरली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इज आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन टेक्सचर कैसा है. अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, एज आई सेड, नेचुरल मेकअप बताने से आपको डरना नहीं है. अगर आपको लगता है कि नेचुरल मेकअप आपका प्रेफरेंस है, यू कैन ऑफ कोर्स लेट द ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट नो दिस. ऐसे फील करने की जरूरत नहीं है कि मैं थोड़ा चीप साउंड करूंगी या ऐसा फील होगा कि नहीं इसको प्राइस कम करना है इसलिए. नहीं, ब्राइड्स जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उस तरीके से नहीं सोचती अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड मेकअप आर्टिस्ट. सो जनरली ये जो क्वेश्चन है उसी में अपना आंसर भी छुपा हुआ है. अगर आपके फेस में डार्क सर्कल्स एंड ऑल वो सब ज्यादा रहेंगे तो आप पार्टी मेकअप कराओ या ब्राइडल मेकअप कराओ, आपको उस डार्क सर्कल्स को छुपाना कंप्लीटली तो पड़ेगा ना. अगर आपके फेस पे कहीं पे भी फ्लॉज है, मेकअप हम क्यों करते हैं? टू मेक श्योर दैट यू लुक फ्लॉलेस एंड टू मेक श्योर टू एनहांस योर फीचर्स. सो पार्टी मेकअप कराओ या ब्राइडल मेकअप कराओ, आपके फीचर्स उतने ही अच्छे से एनहांस होने चाहिए एंड सारे फ्लॉज निकलने चाहिए. अब उसके ऊपर आपको कलर्स डार्कर टोन्स चाहिए या न्यूड टोन्स चाहिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. सो यस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप वेडिंग पे वेडिंग मेकअप ही कराओगे तो इनफैक्ट बेटर है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देयर इज इवन मोर बेटर अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो हम ब्राइड
स्पेसिफिकली कंसिडर करते हैं. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर पार्टी मेकअप, वी नो कि वो 2-3 आवर्स के लिए होता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट द मेकअप प्रेफरेंसेस एंड ऑल चेंजेस. सो इट्स बेटर टू गो अकॉर्डिंग टू द ब्राइड्स packages, and maybe wedding makeup is the best suiting option for them. Uh, how do I ensure my makeup matches my skin tone and doesn't look cakey? I would suggest my brides to go for a half face bridal makeup trial instead of going for the full face. Because जब आपको full face bridal makeup मिलता है ना from makeup artist, you look very good, okay? But you may not understand the efforts जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट या जो प्रोफेशनल है उन्होंने लगाए हैं टू हाइड ऑल द फ्लॉज दैट यू हैव ऑन योर फेस. ठीक है, अब जब हाफ फेस होता है ना, ये साइड बहुत फ्लॉलेस लगेगी, ये साइड में सारे पैचेस दिखेंगे, शैडोज दिखेगा, डार्क सर्कल्स दिखेगा, जो भी है वो सारे इस साइड दिखेगा. तो आपको कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, कि आपके फेस पे ये प्रॉब्लम्स है एंड आपके फेस पे ये सारे प्रॉब्लम्स हमने छुपाए हैं. तब जाके आपको पता चलेगा कितना काम हुआ है फेस पे. अगर आपने फुल फेस किया है एंड इफ योर प्रेफरेंस इज नेचुरल ड्यूई फिनिश, आपके लिए वो दिखने के लिए ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, उसने बहुत अच्छा काम किया. आपने आपके सामने मिरर लिया, आपको बहुत फ्लॉलेस स्किन दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, बट यू मे नॉट अंडरस्टैंड कितना डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए मेहनत गई है या कितने सारे फ्लॉज छुपे हुए हैं. आप नेचुरल स्किन दिख रही है एंड बिकॉज न्यूड कलर सिलेक्ट किए हैं आपको लगेगा वर्क कम हुआ है, बट ऐसे नहीं होता है. सो you will get a good reference if you keep your half face with makeup and without makeup. What is the difference between North Indian and South Indian bridal makeup? I don't feel there is any difference. Is again, all bride makeup is different. It's not categorized according to the caste or religion. It is categorized with according to your skin type, your skin texture, your skin structure. So makeup में difference ज़्यादा नहीं होता है. अब preference में difference हो सकता है. Being if I am a Gujarati bride, I may like loud colors, I may like glittery eyes, but if I am a Gujarati bride, I may also sometimes feel कि नहीं मुझे उस दिन पे loud नहीं जाना है, मुझे subtle and nude makeup पे जाना है. So even being in the same religion, I can get different types of brides. Being in साउथ इंडियन ब्राइड्स में अगर आप पिक्चर्स में देखोगे, फिल्म्स में दिखाते हैं, बहुत न्यूड आई शेडोज रहते हैं, कुछ नहीं रहता है. बट मोस्ट ऑफ ब्राइड्स आई हैव गॉट इज विथ प्रॉपर ग्लिटरी आई मेकअप दैट दे प्रेफर. सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग into cultural difference. Of course उनके पहराव में डिफरेंस हो सकता है, उनके हेयर स्टाइल्स में और जो ज्वेलरीज है उसमें डिफरेंस हो सकता है, जिससे ओवरऑल लुक डिफरेंट होता है. बट हमारे लिए जो भी मेकअप आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल्स है, उनके लिए स्ट्रक्चर, स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर के हिसाब से मेकअप कैटेगराइज्ड होता है, ना कि कल्चर के हिसाब से. सो इफ यू आर doing a proper base makeup with the South Indian attire, you will look South Indian. If you're doing a proper base makeup with a Gujarati attire, you will absolutely look Gujarati bride. So it's not about that. Should I wear contact lenses, colored lenses for my wedding look? I would suggest if you have colored lenses options available, it really create a good आई शेडो के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. बट अगेन दैट शुड बी ऑल्सो, यू शुड कंसल्ट विद अ प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट जो आपको प्रॉपर कलर, आपके कलर एंड अंडरटोन्स के हिसाब से बता पाए, जो आपको अच्छे से सूट कर पाए, ना कि आप ही को पूछ रहा है कि आप बताओ कौन सा कलर लाना है, हम लाएंगे, आपको लगा लेंगे. ऐसा नहीं करना चाहिए. सो मेकअप आर्टिस्ट ने आपको गाइड करना चाहिए उसके ऊपर आपको क्या सूट होगा. ऑफ कोर्स इफ देयर इज योर स्पेसिफिक प्रेफरेंस कि आपको उसी तरीके से जाना है, आप कर सकते हो. बट अगर आपका स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है, आप ओपन हो अलग अलग चॉइसेस के लिए, मेकअप आर्टिस्ट शुड नो आपके ऊपर क्या सूट होगा. सो यस, यू कैन गो. अगर आपके नंबर लेंसेज है, अगर आपको स्पेक्स ऑलरेडी है, देन आई वुड प्रेफर नॉट गोइंग फॉर कलर्ड, नॉट गोइंग फॉर दिस कलर्ड लेंसेज अगर आपको आदत नहीं है तो. एंड अगर आपको चाहिए कि
मुझे यूज करना है बट मैंने कभी पहना नहीं है, तो इट्स बेटर टू ट्राई 2 or 3 टाइम्स बिफोर योर वेडिंग डे, क्योंकि उस दिन पे है ना आप पहन तो लोगे, हम चले जाएंगे बट रात को आपको निकालने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, एंड बिकॉज आपको आदत नहीं है मे बी आप भूल जाओगे। हमारे जो क्वालिटीज होते हैं लेंसेज के जो हम यूज करते हैं, दैट आर ऑल गुड क्वालिटी लेंसेज, जो आपको फील नहीं करेगा कि आपके आपके आईज में कुछ गया है। सो इफ यू यूजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स एंड आप भूल गए, तो लेंसेज को ओवरनाइट रखना कैन बी अ नाइटमेयर फॉर यू, बिकॉज वो आईज को चिपका देगा। कोई भी लेंसेज, कोई भी डॉक्टर भी ओवरनाइट लेंसेज नहीं सजेस्ट करेगा अगर वो 1 डे लेंसेज है तो। सो इट्स again very important to check that with your bride wedding makeup artist. Last question for today that we are taking: how can I make sure my makeup photographers well but doesn't look too heavy in person? Okay, so okay, द क्वेश्चन इज दैट मेकअप फोटोग्राफ्स जो है वो अच्छे दिखे बट इन पर्सन में हैवी ना दिखे। सो आई गेस वो वेडिंग डे पे कंसर्न नहीं होता है। इफ यू आर क्लिकिंग ऑन द ट्रायल डेज, इफ यू आर क्लिकिंग ऑन इन योर कैमरा फोन, जहाँ पे जो वो फोटोग्राफी क्वालिटी नहीं है, कैमरा क्वालिटी नहीं है, राइट, उसमें मेकअप में डिफरेंस दिखना बहुत नॉर्मल है। आफ्टर ट्रायल वी सजेस्ट आवर क्लाइंट्स to only check on the mirror and decide your wedding or your मेकअप जो आपको पसंद आया नहीं आया, ना कि पिक्चर्स के रिलेटेड पे, बिकॉज पिक्चर्स आपको पता नहीं कितने फिल्टर्स हो गए। ब्लश लगाया भी है तो नहीं दिखेगा, लिपस्टिक लगाई भी है तो फिर वो शायद लाइट दिखाएगा, बिंदी यहाँ पर लगाई है वो पिंपल समझ के स्वॉश कर देगा। सो डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स दैट यू हैव क्लिक्ड एंड मैं बाद में जाकर सोचूंगी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बताऊंगी, उसका मीनिंग नहीं है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रेशली आपको जितना लुक याद है, आपको जितना पसंद आ रहा है, तो वो जो पसंद और नापसंद वाले पॉइंट्स है वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही डिस्कस कर लो, या फिर आप कहीं पे नोट डाउन कर लो सो दैट आप भूल नहीं रहे हो, एंड विद इन 2 days आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि आपको मुझे उस मेकअप आर्टिस्ट को बुक करना है नहीं करना है, सारी चीजें। सो ये वेडिंग डे से पहले ही जनरली ट्रायल्स में सारी चीजें डिसाइड होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज, अगर हम फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस दिन पे वेडिंग डे पे अगर हम ब्लश एंड ऑल लगाते हैं, हल्का सा ब्लश भी फोटोग्राफी में कैप्चर होगा, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कैमरा इज रियली वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स विद गुड लाइटिंग्स। सो आपका मेकअप इन पर्सन हैवी होने की जरूरत नहीं है अगर आपको उस दिन पे फोटोग्राफी में अच्छा लुक चाहिए। इट्स ओनली फॉर द कैमराज दैट वी हैव। सो या इससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यस, this is it for today and the questions. I think आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे एंड बहुत अच्छे से नॉलेज मिली होगी। If you have any questions or doubt, you can anytime ask me in the comment sections as well. Chats open है, but अगर आपको कोई questions है, आपको पूछना है कुछ, आप मुझे कभी भी comments में पूछ सकते हो। This live will be streaming on my channel, so you can anytime ask me for that. Thank you so much. Thank you so much for your time. And again, as I said, I will be coming up with all these live sessions more and more so that you get good knowledge. And जो भी प्रॉब्लम्स है बिटवीन मेकअप आर्टिस्ट एंड द क्लाइंट, जो डिफरेंसेस है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर मेकअप आर्टिस्ट गोज थ्रू, एंड ऑल्सो आई अंडरस्टैंड माई क्लाइंट्स। बीइंग having 8 years of experience, I understand how my clients feel, and also now when we think from a client's perspective, sometimes I also feel the questions that they are asking is very normal and should be answered, and generally makeup artist के लिए वो चीजें बहुत difficult हो जाती है। So here it's just a genuine effort from my side to solve all the questions that brides have and should be solved on time before the wedding dates, and that is the reason I'm here to give you all the techniques. So thank you so much and see you soon later. Bye bye.